आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसको लेके आज की डेट में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एंड दैट इज नन अदर देन यूएसए। इस डिप में यूएसए को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? देर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो टेक। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बैकएंड पर चल रही होती हैं, मार्केट को पता नहीं होता है, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली पता नहीं होता है। सो वी मेक श्योर दैट थ्रू चैनल्स लाइक योर्स हम स्टूडेंट्स तक वो चीज़ें पहुंचा सके। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, so you mentioned a dip as well, right? So basically market is a dip, I understand. बहुत सारे बच्चों के वीज़ा रिजेक्शंस हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, बट इन वेस्टक्लिफ द बेस्ट पार्ट इज जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सभी के साथ वी आर एसोसिएटिंग अ स्टडी एडवाइजर फ्रॉम आवर इंटरनेशनल। दे आर ऑल्सो हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स विद देयर वीज़ा प्रिपरेशंस, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस एक्स्ट्रा एड ऑन करके, क्योंकि आजकल एड ऑन का ज़माना है, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट गॉन आर द डेज के जहाँ पर बच्चे सिर्फ ये बात करते थे कि आई हैव दिस, आई हैव दैट, मेरे पास इतना एक्सपोजर है, मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है। नो, दैट्स नॉट गोना वर्क नाउ, राइट? यू माइट हैव सीन द रीसेंट चेंजेस विद यूएस वीज़ाज एज वेल। अभी रिज्यूम हुए हैं, जो पॉज लगा हुआ था ऑलरेडी, राइट? विच इज़ रिसेंटली रिज्यूम्ड विद अ बूम एंड अगेन विद अ कॉशन दैट अब आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पब्लिक करनी होगी। Hello everyone, welcome back to the channel of the Immigration Gurus. My name is Raghav Chanda and this is Talk with TIG, a podcast series in which we try to tell you what's best for you if you are also planning to study abroad. And today I have Mr. Divyanshu Bhargav with me. Hi sir. Hi Raghav. आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसको लेके आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है एंड दैट इज नन अदर देन यूएसए। तो सर, आप जब मेरे पास आए आपने मुझे बताया कि मैं यूएस को रिप्रेजेंट करता हूँ एंड माय फर्स्ट रिएक्शन वाज दैट इस डिप में यूएसए को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? अमेजिंग। सो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। देर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो टेक। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बैकएंड पर चल रही होती हैं, मार्केट को पता नहीं होता है, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली पता नहीं होता है। सो वी मेक श्योर दैट थ्रू चैनल्स लाइक योर्स हम स्टूडेंट्स तक वो चीज़ें पहुंचा सके। I'll just give you a glimpse that I represent, as you mentioned, that I represent Westcliff University, right, which is in Irvine, California. इस यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, so you mentioned a dip as well, right? So basically market is a dip, I understand. बहुत सारे बच्चों के वीज़ा रिजेक्शंस हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, बट इन वेस्टक्लिफ द बेस्ट पार्ट इज जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सभी के साथ वी आर एसोसिएटिंग अ स्टडी एडवाइजर फ्रॉम आवर इंटरनेशनल टीम। यानी कि वो लोग जो इंटरनेशनली हमारी यूनिवर्सिटी को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, right? So we have a team of 50 such people who are associating with multiple students, but then they are also helping those students with their visa preparations, क्या क्या informations extra add on करके, क्योंकि आजकल add on का ज़माना है, right? So it's not about gone are the days के जहाँ पर बच्चे सिर्फ ये बात करते थे कि I have this, I have that, मेरे पास इतना exposure है, मेरी प्रोफाइल इतनी strong है। No, that's not gonna work now. Right? You might have seen the recent changes with US visas as well. अभी resume हुए हैं, जो pause लगा हुआ था already, right? Which has recently resumed with a boom and again with a caution that अब आपको अपनी Instagram profile public करनी होगी, right? So I'm actually worried about the ones who are already in relationship, but then anyways, right? So yeah, so they are sort of trying to make things possible for students who are coming to Westcliff University, our international team, right? Let it be any government. Nobody is there to let in any sort of wrong thing or wrong people into their country, right? So as a country, they are doing their work. As a university, universities like Westcliff are doing their part of job and making sure that almost every student gets visas. On it, so it's everything is happening so that a genuine student can enter that. Exactly. All right. So sir, अब हम वेस्टक्लिफ के बारे में स्पेशली बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से है ये यूनिवर्सिटी, कहाँ का इसके कैंपसेस हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है? डेफिनेटली। सो बेसिकली वेस्टक्लिफ जो है, इट वाज फाउंडेड इन 1993
काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे आपके जो ये पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे जो शायद उस साल में या उसके बाद में बॉर्न हुए होंगे, बट देन दैट इज़ अ वेरी रीसेंट एक्टिविटी फॉर देम, आई एम श्योर, राइट? So it was founded in 1993. It is in Irvine, California. That is our main campus. But then we are not limited to that only. We have got multiple campuses. Jahan par we have got 3 campuses in California, including the Irvine one. We have got a campus in LA. We have got a campus in San Francisco. Right. Then we have got 2 campuses in Florida, out of which one is in Miami. Right. So imagine a life in Miami. Right, or imagine a life in California, right? Then we have got one more campus that is in Texas. So again a hot location जहाँ पर आजकल students काफ़ी ज़्यादा prefer कर रहे हैं जाना, right? And we are now coming up with 2 more campuses. I'll keep it unofficial so far and low-key to me only. But then yes, we are very soon announcing 2 more campuses of Westcliff University. So आपने जैसे start भी किया, like it's a dip, right? But then in this dip, Westcliff is growing like anything. You are coming up with 2 new campuses. Exactly. So what type of courses are offered in the Yeah. So talking about the courses, we have got BBA, Bachelor's of Business Administration. Then we have got BA in Education. We have got BSc and BS IT. So what is BSc? BS in Computer Science and BS in Information Technology as well. Right? Then if I talk about masters, so we have got a range of courses, right? It is not limited to only bachelors or only masters. There is a surprise that I'll disclose by the end of my part of this conversation. So yeah, so in masters we have got MBA of any sort. Like if you are looking for entrepreneurship, if you are looking for a tech course, so काफ़ी students ऐसे भी होंगे जो अभी हमें देख रहे होंगे and they might be looking for an option which is basically either they are from commerce background and looking for some STEM courses या कुछ ऐसे technical courses जो उन्हें आगे OPT दिलवा सके या फिर post study work permit in a layman language I'm saying दिलवा सके, right, in the US. So yes, we have got all sorts of MBAs as well. We have got masters in computer science also. We have got masters in information technology as well. So what are the basic requirements for students if we talk about undergraduate or postgraduate student? So when it comes to undergraduate students, anybody who has secured 50% in their 12th can apply to Westcliff University actually. And we do accept applications on the basis of medium of instruction जिसे हम general term में MOI बोलते हैं, right? Apart from that, yes, अगर वो English, and my personal choice would be, या preference would be कि मेरे students from my country should go with some English proficiency. हम भी दिखाए ना Britishers को कि हम भी दिखाए ना अंग्रेज़ों को कि we can also speak in English, right? So for that we have got IELTS, we have got TOEFL, we have got PT, we have got Duolingo. So for the requirements, obviously they can come down to you and they can have a conversation with your team. And what about the postgrad students? So any students who have secured 62% in their bachelor's or 65% and above in their, so 62 to 65 is the range जहाँ पर हम थोड़ा सा scrutinize करते हैं profile को. More details obviously with TIG team. So yeah. So anybody above 62% is good to go for us. थोड़ा सा scrutinize होगा, but then above 65% अगर है किसी का undergrads में, they are good to go with us. Now let's talk about the thing जो सबसे ज़्यादा excite करते हैं बच्चे को, fees कितनी आएगी, scholarship कितनी? Obviously, so पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा excitement बढ़ा देता हूँ. We are also offering MOI in postgrads as well. And अगर fee structure की बात करते हैं तो काफ़ी bare minimum है. So Westcliff specifically जाना जाता है अपने Day 1 CPT के लिए. मैं थोड़ा सा आपको और आपके व्यूअर्स को जिस्ट दे देता हूँ एज इन व्हाट इज़ Day 1 CPT. सो बेसिकली अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है USA में, विच इज़ बेसिकली योर US का आधार कार्ड, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? सो इफ़ यू हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर और एन SSN ID दैट इज़ एक्टिव, और अगर आपके पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉयर है जो आपको पार्ट टाइम जॉब्स अवेल करवा सकता है, इन दैट सिनेरियो आप कैंपस पर लैंड करते ही जॉब करने जा सकते हैं विथ obviously the due permission of your student advisor or your
DSO, द डेजिग्नेटेड स्टूडेंट ऑफिसर. आप उनसे NOC लीजिए, अपना क्लियरेंस लीजिए यूनिवर्सिटी से, एंड देन यू आर फ्री टू वर्क, राइट. टॉकिंग अबाउट तो ये तो मैंने ROI की बात कर दी, बट इफ आई टॉक अबाउट दी स्कॉलरशिप्स, वी आर ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स अप टू $5,000 ऑन मेरिट बेसिस, and apart from that, additional scholarships are also there. Up to $10,000 are offered to each and every student, right? Other than that, if I talk about the fee structure, it is very bare minimum. अगर हम undergrads की बात करते हैं तो every year it costs you around $13,500. अगर हम पोस्ट ग्रेड की बात करते हैं तो $14,800 के आसपास. दिस इज विदाउट स्कॉलरशिप. आफ्टर दैट दे कैन अवेल स्कॉलरशिप्स ऑब्वियसली. सो फीस तो काफ़ी सही है सर. और कुछ ऐसे USP बताओ अपनी यूनिवर्सिटी की जो बच्चों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वहाँ पे. डेफिनेटली. सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी लोकेशन, सो प्राइमरी है हमारे लोकेशन, राइट. वी आर इन अर्विन, विच इज़ अ टाउन फॉर हॉलीवुड इन कैलिफोर्निया. Again, we have got San Francisco, we have got other campuses जो कि काफ़ी demanding है and popular locations है. ऐसा नहीं है कि हम कहीं suburbs में students को डाल रहे हैं. Again, अगर मैं अपने Irvine campus जो हमारा main campus है, अगर मैं उसी की बात करता हूँ तो that is just 5 to 10 minutes away from the International Airport of California, right? So as soon as your student is landing, they are ready to move. मतलब उन्हें शायद जितना उनका वीजा फीस होगा शायद उसका आधा उबर का पैसा लगेगा, एंड दे विल बी देयर इन देयर कैंपस. एग्जैक्टली राइट. सो दैट इज वन थिंग दैट इज क्वाइट कैप्टिवेटिंग. काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अक्रॉस और अराउंड द कैंपस इटसेल्फ. वी हैव गॉट a pretty huge campus to be honest, and within the campus also, जैसे हमारी जो international team की मैंने बात करी तो some of our students, our Indian students are also working as the international advisors as well to some of the upcoming students, right? Then हमारे we have got tie-ups also with some of the corporates. तो we have got 78 good corporates, limited corporates. हम ऐसे numbers boast नहीं करते हैं 100 के ऊपर tie-up है जी, 500 के ऊपर है. We have got pretty good number of limited corporate tie-ups, but then they are top of the industry. If you are talking about Siemens, if you are talking about Sony, if you are talking about Mitsubishi, then you are somewhere down the line talking about Westcliff, right? Then और भी काफ़ी सारी exciting चीज़ें हैं which your students can come down to the immigration guru's office and explore over here. इसके साथ साथ बच्चों का एक सवाल होता है कि मेरी पढ़ाई के साथ साथ क्या मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वहाँ पे. डेफिनेटली. जैसे मैंने आपको बताया Day 1 CPT है, सो दैट इज़ अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कॉर्पोरेट टाई-अप्स हैं, सो वी हैव गॉट करियर सर्विसेज सेंटर्स एज वेल, राइट, जहाँ पर लेजिट स्टूडेंट्स के जो सीनियर्स हैं, यानी जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके जो ऑलरेडी सीनियर्स हैं जो किसी बड़ी कॉर्पोरेट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, they are there to advise them, they are there to help them. We have got a dedicated student placement cell also, जहाँ पर हमारे dedicated team हमारी काम कर रही है. I've got my colleagues who are working over there, right? And apart from that, companies do come on campus as well, right? So job fairs होते रहते हैं. We have got regular job fairs as well, right? We have got regular corporate visits. We have got regular placement things happening. So yeah, students can always avail these exclusive perks with Westcliff. Alright. So before we end this podcast today, something you would like to add for students? As an advice or what? Like Whatever you would like to add. So let me keep it very simple and crisp. So if you are coming to US, be genuine. That's a request and that's an advice from a big brother to all of you. Big brother or small brother, whatever you want to call me, or a friend, right, who is out there helping you out for your success in USA as a student. So be genuine, be authentic, and we have got your back. So come to Westcliff. We'll sort everything in your life for you. All right. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you so much, sir, for joining us here. Thank you. And we shall see you in the next.